या 5ला येऊ दे. अभिजित सरांचं काढलंय ना त्याच्यातून ते एकदा थांब आता ह्यांचं होतपर्यंत आपण थोडं बोलून घेऊ. अभिजित सर नाही आहे तर हे तर वाचायचंच आहे. आपण ते काढलं ना जिथे ते सॅपलिंगवालं तुझ्या याच्यावर एस डी तिथून हे काढलं ठीक आहे लक्षात ठेवशील आणि हे आरामात जाऊ द्यायचं. फोटो झाल्याच्या नंतरच त्यांना थँक्यू सर म्हणायचं. हे घे कोणाला इथे आता अंगारकर वाचायचं. Next in sequence, Ritika Hangarkar, Ritika Muniyar, Ritika Rokre, Sahil Nimje, and Sakshi Jets. Please come on the dais. Those who have missed out, they also can join. I think Faria is there. Yeah, you also can come. And Ashwini, please come on the dais to receive your scroll. Ashwini, Faria, you can also come. ही अश्विनी आहे ना आणि फारिया मला घ्यायची आता पुढची दे माझ्याकडे. Ashwini from here only. Ashwini Faria, you can come on a dais. And up next, Samiksha Temdhare, Samruddhi Rangari, Sara Yelne, Sarni Baes, and Sarthak Gajviye. हे पुढचे 5 घेऊन घे मग आपण KPR ना थँक्यू नंतर म्हणू. आणि हे तेव्हाच सुरू त्याचं जेव्हा तिकडून कॉल येईल त्याचा प्रोसेशन वॉकसाठी सुरुवात करताय हे एवढे वाक्य नाही तुझ्या ह्याच्यातले हां आणि हे जे आहे ते त्या ब्रिजच्या तिथून टर्न जेव्हा घेतील ते नेक्स्ट तुला घ्यायचं सर्वेश. Next in sequence, Sarvesh Chaudhary, Saurabh Kothare, Sejal Bakre, Sejal Mahajan, and Shamit Mirza. हे झालं की सरांना थँक्यू करू. सेजलची बहीण दिसते मला ग्रीन पॅन्ट वाली तिच्यासारखी मला वाटलं तीच आहे का नाही माहिती नाही. थँक्यू रेवतकर सर. Next, I request Professor Subhash Chandra Chirde to please join us on the dais. Next in sequence, Shraddha Daga, Shruti Agrawal, Snehal Chaudhary, Swarup Rathi, and Tahir Hussain. पूर्ण आता सुभाष सरच घेतील.
हे पण तूच घेऊन देणार इथले पुस्तोडेपासूनचे यांचं होऊन जाऊ दे. तू घे ना तुला आलं. Next is next sequence Tanya Pustole, Tanvi Rasekar, Vaishnavi Gupta, Varada Girgaonkar, and Vedant Sharma. Next sequence Vidhi Agrawal, Yash Patpode, Yash Sonone, Rashasvi Tarpe. कुठपर्यंत झालं? सोनूने झालं आता इथे. हा मी घेतो, मीच घेऊन घेतो. Next group of students will be from PG department, that is Masters of Design. So the sequence of student is Amitosh Singh Kapoor, Abhishek Eklare, Neil Ariyoratan, Shrikant Hinge, and Piyush Mawale. Next is students from MArch Landscape Department, Gargi Chati, Tanvi Bajait, and Vaishnavi Belve. तर हे झालं. बाबूजींना याला 2 मिनिटं वेळ असं कळलंय मला. प्रोसेशन मग तोपर्यंत करता येणार नाही जोपर्यंत तिकडून ग्रीन सिग्नल मिळत नाही. तर हे झाल्यावर आपल्याला आता काय करणार आहे मध्ये फक्त अनाऊन्स करतो की हो ते एकदा करणार आणि हे करणार की आर गेस्ट्स विल आर अबाउट टू अराईव्ह, सो वी विल बी जॉईनिंग शॉर्ट, वी विल बी स्टार्टिंग शॉर्टली. या लिस्टचं काम झालं. तुझं पेज रेडी आहे? ठीक आहे, बोलायचं नाही आताच. Thank you, Subhash sir. Our guests has arrived in the campus, so we are about to start the program very soon. I hope I hope all the students have received their scroll. If anybody has missed, they can come. Please come on the dais if anybody has not received their scroll.
कमी मूल्य आहेत की त्या आपण सीट जास्त ठेवणार सीट जास्त ठेवणार का सीट काय म्हणजे जर वॅकंट राहतात म्हणून चांगलं नाही वाटत आता ते क्राऊड आल्यावरच होईल की मी येऊ का अपडेट घेऊन आकांक्षाकडनं बरं थांब एकच मिनिट फक्त थांबून जा सोडून हां इस कोर्ट में होंगे डिस्ट्रीब्यूट तो जो बच्चे हैं लोग उनका फिर मास्टर्स वाली बैच में 2 या 3 बैच के उसके बच्चे नाही बरं नाही अजून वेळ आहे निखिल सर सांगतील आकांक्षाला आकांक्षांचं फारच काय झालं आकांक्षांचं फारच आपल्याला शिवाय कारण का मोबाईल नाही मी विचारलेलं आहे म्हणून तिला सांगितलं निखिल सर तिला कळवणार आहे बस मग काम झालं तिचं हम्म? ठीक आहे प्रोसेशन मग आपली ती सारा इथेच आहे मागे आणि हे सगळं झाल्यावर मग मी हे घेणार आहे आता नेक्स्ट काय करायचं थांबायचं की जायचं पुष्कळ वेळ असेल तर मग एवढा वेळ घरातच परत अनाऊन्स नाही करत कारण की ते असं वाटतं की वारंवार फक्तच अनाऊन्स करतो हा शब्द तू लिहिला पण तुला माहित आहे नारायणा प्रसाद पाटील तुझी कॉपी बहुतेक मी घेतली फेमस करून पण पाहिजे देतो
आहे माझ्याकडे. नाही पेन हा इथे असं ओपन करून इथेच राहू देतो. तू लिहून घे. हम्म? वे हो हो, फक्त बाबूजी यायचं तेवढं मला कळलं. त्यांच्यासाठी वाट बघतो. पहिलं कोण आहे? डीन रिसर्च म्हणजे मृणाल आहे इथे आपल्या बाजूला चेअरवर. हम्म? कोणते? KPR च्या बाजूला तेच आहेत ते IGBC शंकर घेणे सर. काय करायचं? हा बाबूजी आले. येस, ते ते फक्त रेडी राहा, बघू आपण काय. निखिल सर, आकांक्षा, हां ते VIP रूम मध्ये जातील. बस. मॅडम दिसल्या का? मॅडम हां. हो चालेल. एक मिनिट. मी करतो अनाउन्स. एक मिनिट.
Our guest has arrived in the campus, so we will be starting in next 5 minutes. Sonali, Good please. evening and welcome one and all present here. I request you all to please be seated. We are about to begin the most awaited ceremony of the year, that is the oath taking ceremony 2026 in Priyadarshini Institute of Architecture and Design Studies, Nagpur. Before we begin with the program, I request the audience to kindly keep their mobile phones on silent mode to avoid any disturbances during the program. Thank you. Ladies and gentlemen, distinguished guests, welcome to this special occasion. As you begin this procession, we extend our warmest greetings. Your presence adds meaning and joy to this gathering. Each step you take represents shared memories, treasured connections, and the excitement of the future. Today we come together not just as individuals, but as a united community with a shared purpose. On this special occasion, we welcome our today's chief guest, Honorable Director of MNIT, that is Bhaldiya National Institute of Technology, Jaipur, Dr. Narayana Prasad Padi, Lokmanya Tilak Jana Kalyan Shikshan Sanstha's Honorable Chairman, Dr. Satish Chaturvedi ji, Sanstha's Honorable Secretary, Srimati Abha Chaturvedi ji, Director LTJSS, Shri Abhijit Deshmukh, Director Engineering LTJSS, Dr. Vivek Nanodi, Director Architecture LTJSS, Architect Kabir Khan, Principal of Priyadarshini Institute of Architecture and Design Studies, Professor Nishant Manapure, and other dignitaries present here, faculty members, parents, and dear students. ओके, थांब आता. साराला बोलवून घेऊ. तू बोलून घे सारा. या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतवर्णासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा. Thank you, Sara. I request all the dignitaries to kindly take their seats on the dais. I also appreciate the support of Director General Body, Shri Dushan Chaturvedi ji, and Member of General Body, Srimati Sheetal Chaturvedi ji. I also recognize the support of Director R&T, LTJSS, Dr. Nitin Chaudhary, Dean Academics Planning and Development, LTJSS, Dr. M.P. Singh, Principal of Priyadarshini Engineering College, Dr. Shri Krishna Dhale, and our Sanstha's Chief Accountant and Finance Officer, Mr. Samir Chitnis. I also recognize the gracious presence of IGBC Chairman Shankar Ghime sir and Architect Parag Yelne, Chairman II Nagpur Center. We welcome you, sir. A very good evening to everyone present here for today's oath taking ceremony 2026 in PIADS Nagpur. This oath taking ceremony is nothing short of a dream turned into reality for our final year students. Today, we come together to reflect on and celebrate the incredible 5 year architectural journey of these talented individuals who have grown from enthusiastic freshmen into skilled architects ready to step into the professional world. Let us take a moment to applaud their unwavering dedication, passion,
and creativity, which have shaped their remarkable transformation. Congratulations, class of 2026. May your future be as inspiring as the building projects you have envisioned and brought to life. This ceremony holds a great significance and has been a cherished tradition of our institute for over a decade. I, Professor Pratik Barsagade, along with Professor Sonali Borate, extend a warm and heartfelt welcome to all the dignitaries, principals of various colleges, faculty members, esteemed professionals from the architectural fraternity, parents, media representative, and of course, our dear students as we gather for this momentous occasion. Taking an oath marks a significant milestone in every student's academic journey. As the saying goes, to take an oath is to embark on the path of growth. With that, let us commence this joyous celebration. Now, I would like to invite Principal PIADS, Professor Nishan Manapure, the navigator of this flagship of knowledge, to extend a formal welcome, setting the tone for this meaningful occasion. Namaskar. A very good evening to all of you. The sun is just setting down. I saw a beautiful sunset happening just a few moments ago. And it's a wonderful thing that the sun always comes back tomorrow morning. And every other day we have the sunrise happening, the sun and its power giving us the energy that we so require. Our whole existence is because of the sun. There will be many situations where we may not be able to see the sun directly or get its energy directly. There may be a day of fog, there may be a day of mist, there may be a day of clouds, but come what may, the sun will come back again. And beyond those clouds, beyond those eclipses, beyond those fog, the sun keeps on shining with the same intensity, with the same energy, and with the same intent. The intent of giving, giving, and giving. The only thing it knows is to give and give to us. And that's exactly what your life is going to be. To all the graduates who are here, or the graduating batch which is here for this momentous occasion, momentous day, it's exactly going to be like the life of the sun, right? There will be some days which will be full of sunshine. There will be some days which will might be a little bit of clouds. Some days, sometime the sun will go towards the south, go away from you, but come what may, it will always come back. And that's exactly what you also have to look at, the resilience of being a professional. It's not just the skills that matter, it's not just the talents that matter, it's also the ability to come back in any situation and not forget your intent. We are so lucky to be part of the field of architecture. Architecture is also about, it's just like the sun, it's also about giving, giving, and giving. We are always doing things for somebody else. Right? And our intent of wanting to give should never ever become low or become less powerful. So we, just like the sun, right? And architecture is also just like the sun. Civilizations may come and go, but the sun never sets. In the same way, civilizations may come and go, architecture never sets. Then architecture has got that power. And congratulations to all of you to go through this beautiful journey of architecture and become graduates in a very short time, in a very few days, a couple of months. Will be actually making a difference to this society, to this world. Right? And a very, very big congratulations to all of you, to the parents who have been part of this journey, part of this support system that PIADS has to ensure that your wards are becoming the best possible students of architecture during the 5 years, and I'm sure they will shine when they come out as go out as professionals.
And so thank you so much to all the students and parents for becoming the backbone of PIADS. And thank you so much and welcome to all the students and all the parents. Talking of uh, the sun gives, yes, right? But do we know how to take things from the sun? It's willing to give, but the ability to take is something that we need real good intellect and good experts. And we are so lucky to have one of the most brilliant minds that we have in our country at the director of MNIT Jaipur, Dr. Narayan Prasad Padi. Thank you so much, sir, for being here and welcome to PIADS and this momentous occasion. Right? We are very fortunate to have you and we are looking forward to your words of intellect as well as word of wisdom. He's not just a great achiever, he's also a wonderful human being. And that is something that we should never ever forget. Our achievements, our abilities, our talents, our skills, they are of course important, but we should never ever forget that we are first and foremost humans. And having that compassion, having that softness, having that humility is something that we learn from Padi sir. Right, thank you so much, sir. The sun, of course, needs, uh, we need something and somebody to guide us to take things from the sun. Right? And I think we are all are here are lucky, the faculty, the students, the staff, the parents, we all are lucky that we have the best possible set of guiding lights, Dr. Satishji Chaturvedi and Madam Abhaji Chaturvedi. Both of them have guided us so well and they have established the family of LTJSS in such a way that the sun, in fact, will never ever set on LTJSS and in fact, it will keep on shining and keep on growing stronger and bigger. Thank you so much, sir and madam, for being with us. We also are thankful that we have with us uh, as a backbone and as support Shri Dushyanji Chaturvedi and Srimati Sheetalji Chaturvedi as our guiding lights, the younger generation, which is taking forward that same energy and taking it to even better and bigger heights. The way LTJSS is growing and expanding, it's unimaginable. And we are very lucky, privileged, and proud to be part of the LTJSS family. Of course, all this energy has to be channelized through certain actions, and that actions are being taken by our beloved director of LTJSS, Sri Abhijit Deshmukh, sorry, and his energy, his guidance, and his vision to ensure that these aspects of growth are very strongly imbibed into each one of us is just because of his energy and his support. Thank you, sir. He will be joining us in a short while. He is busy in some activities and some office work, and he will be surely joining us, and we look forward to his presence as well. We are also thankful to the all the dignitaries from the LTJSS family. Just like the sun and its planets, we are a family, we are a solar system where we have the director of engineering, Dr. Vivek Nanoti, who is one of our very good friends and guides and who has always been such a wonderful support system for us and guidance for us, and of course the other dignitaries from the LTJS family who have always been with us. Thank you so much, sir and madams. And of course, we have guests who are here. We welcome the chairman of IIA, Parag Elne sir, and chairman of IGBC, Yime sir. So thank you so much for being here and supporting us. Right? PIADS family is a proud member of this solar system, right? And we all have taken so much of efforts under the guidance of the main head of the family. And we, thanks to all the support, we have been able to rise to very high levels. The leader of the family, Professor Habib Khan sir, thank you so much for being the support that you have always been and the way you have guided us and guided PIADS to achieve what we can. And you have shown us what we are actually capable of.
Thank you so much and welcome, sir. And of course, all the faculty, all the other students, parents, and the staff. We all together have a very big role to play. Yes, the graduating batch is getting into a life of wondrous moments, but let's always remember that we have been a very strong and small but strong part of that journey, and will always be there for them to take their career and their life ahead. Right? So, welcome to everybody to this momentous occasion. It's a day of not just celebrations, not just memories, but also a day to remember that responsibilities, being sensitive and sensible, and being accountable and taking up responsibilities to make a difference is what this day is about. Thank you so much and welcome to everyone again. Namaskar. Thank you, Nishant sir, for your adorning words. At PIADS, we believe all our wisdom is stored in the trees. Thus, continuing to our tradition of welcoming the dignitaries with sapling, I request Director Architecture LTJSS Architect Kabir Khan to welcome our Chief Guest Dr. Narayan Prasad Padi, Honorable Director of MNIT Jaipur, with a sapling and a token of love from PIADS. We welcome you, sir. आता सुरूच ठेव का बंद नाही करणार कसं audio? Now I request Principal PIADS Professor Nishant Manapure to welcome Honorable Chairman LTJSS Dr. Satish Chaturvedi ji with a sapling. We welcome you, sir. थांबून जा. I request Dean Academics Professor Anuya Killedar More to welcome Honorable Secretary LTJSS Srimati Abha Chaturvedi ji with a sapling. We welcome you, ma'am. Under the valuable guidance of Chairman Sir and Abha Ma'am, LTJSS is fully devoted to the development of society by providing quality education from pre-primary to postgraduate and doctorate level. Now, I request Dean Research and Development Professor Mrunal Gaikwad to welcome Director Engineering LTJSS Dr. Vivek Kanoti with a sapling. We welcome you, sir. It is a proud moment for us to announce that the PIADS annual magazine is ready for its unveiling. I would request our teacher in charge, Professor Manisha Yelne and Professor Vaidehi Pusatkar, along with a dedicated team of students who have worked tirelessly towards the successful compilation of this year's magazine. I kindly request uh, faculty members as well as their students to come up on the dais to help release of this magazine. Yes. Now I request our chief guest, Dr. Narayan Prasad Padhi and Chairman LTJSS, Dr. Satish Chaturvedi ji, to release the PIADS magazine. Let me join to have a big round of applause. This year's theme of magazine is Confluence, Water and Architecture. This issue of magazine explores the vital relationship, the confluence of flow and form
city and stream, structure and soul. Thank you, sir. Thank you all the dignitaries, and thank you PIADS magazine team. Dear, stu- Dear students and parents, at PIADS we are committed to the noble tradition of honoring excellence, believing that true inspiration blooms through the recognition. It is our privilege to celebrate the brilliance of our faculty and students, felicitating their remarkable academic achievements as a testament to their dedication and pursuit of greatness. For this, I request Honorable Secretary LTJSS Srimati Abha Chaturvedi ji to felicitate Professor Sarika Kulkarni upon receiving prestigious patents in her name. She has designed few medical products and equipments which are useful for patients, doctors, and hospitals in general. The first patent is for caliper for leg, the second for modular wheelchair which can open as bed for treatment, and the third one for orthopedic fixator for leg fractures and limb lengthening. Oh, congratulations. Congratulations, Sarika ma'am. I again request Abha ma'am to felicitate Professor Manisha Yelme for receiving patents of name. This year, Professor Manisha has received her first patent for solar power assisted foldable cycle, the second patent for LED integrated footpath railing. Congratulations, Manisha ma'am. One more patent for foldable drawing table has been received jointly in the name of PIADS, Professor Manisha Yelne, and our final year student Madhur Gupta. It was developed as a part of the product design subject. This origami inspired design highlights collaborative learning and innovation within the institute. Congratulations, Manisha ma'am and Sarita ma'am. Congratulations, Madhur. Thank you, Ava ma'am, and all the dignitaries. Now we move on to one of the most prestigious recognitions of the evening, the Best Outgoing Student Award. This award is presented to the student who have demonstrated outstanding and consistent academic performance, exemplary conduct, and meaningful contribution to college life throughout their journey. It is a moment of immense pride to announce that this year's Best Outgoing Student Award from the girls category goes to whom? Any guesses from the audience? Okay, this year's Best Outgoing Student Award from the girl category goes to Snehal Sunil Chaudhary. I request Chairman LTJSS Dr. Satish Chaturvedi ji to felicitate the awardee. Heartiest congratulations, Snehal. I would request Snehal to be on a dais for a while. And from the boys category, the Best Outgoing Student Award of this year goes to audience. Any guesses?
This year's Best Outgoing Student Award from the Boys category goes to Giridhar Surendra Jogwar. Giridhar, please be on a dais. I again request Chairman Sir to felicitate the awardee. Let us congratulate both the awardees with a big round of applause for their remarkable achievement in their journey of 5 years of college life. Thank you, sir. Thank you, Chairman, sir. Next, I would also like to take this proud moment to announce the 10th semester topper from last year's graduated batch of 2025. And this award goes to, any guesses, audience? Yeah, this award goes to Ishita Nagpal from batch of 2025. Ishita, please join us on the dais. I request our chief guest, Dr. Narayan Prasad Padhi, to felicitate Ishita Nagpal. This remarkable accomplishment is a reflection of her commitment to excellence, and we celebrate her success with great pride and admiration. We extend our congratulations to Ishita for her outstanding achievement in securing this position. Congratulations, Ishita. Thank you, sir. Yes. It is It is my privilege to introduce the backbone of architecture education in LTJSS, whose contribution have shaped the very fabric of architectural excellence here in PIADS. A leader, mentor, and innovator, architect Habib Khan, Director Architecture of LTJSS, has been a guiding force in nurturing creative minds and inspiring future architects. His dedication to merging tradition with modernity has left an indelible mark on the field of architecture. I now invite Architect Habib Khan to share his wisdom and address this august gathering. मजा नहीं आ रहा आज, मतलब ऐसा ठंडा ठंडा लग रहा है गर्मी के मौसम में। थोड़ा तालियां वाली बजाओ, एनर्जी आनी चाहिए यार। यंग ग्रेजुएट हो, भारत के भावी आर्किटेक्ट्स, भारत को बनाने वाले, इस राष्ट्र को बनाने वाले। और अगर मेरा भाषण पसंद ना आए तो बीच में ताली बजाते रहना, तो मुझे लगेगा आप लोग सब जागे हुए हो। ठीक है, एक बार फिर से। आदरणीय बाबूजी, मैडम, जब भी ये कार्यक्रम होता है, ओवर टेकिंग सेरेमनी, मतलब आई फील ओवरवेल्ड कि हमारे डेट के हिसाब से दोनों अपनी डेट डिसाइड करते हैं, हालांकि वास्तव में हम उनकी डेट के हिसाब से करते हैं, पर ऐसा बोलना पड़ता है। पर आज तक जब से हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है, ओवर टेकिंग सेरेमनी, कॉन्वोकेशन सेरेमनी, एक भी सेरेमनी दोनों ने मिस नहीं की है। और उसके बाद ड्रेस कोड भी फॉलो करते हैं। तो सर आपका दिल से धन्यवाद ये करने के लिए। जोरदार ताली हो रही है, बच्चों से तालियां नहीं आ रही। I have worked with about 10 directors and 5 vice chancellors across the country, but I have never met a man like our chief guest, Dr. Narayan Prasad Padhi. He is not only a researcher, academician,
but a very gentle and humane administrator. And today I came to know that he's an excellent teacher. Those of you who have missed his lecture today morning have missed something. Nanoti sir would be able to tell more about it. So I welcome Dr. Padey for honoring my word in coming to my institution. Thank you so much. Dr. Nanoti, Director Engineering, LTJSS, Principal Manapure sir, all my deans, my faculty sitting, who are my backbone, who are my main strength, my core strength in this institution. Parag, my friend, and Gime sir, my friend, my consultant, my professional partner. All of you dear students who are now graduating today, and all the parents who have honored by coming here, honored all of us by coming here. A warm welcome to all of you, and namaskar and good evening. थोड़ा थोड़ा आया मजा आ रहा है धीरे धीरे और बढ़ेंगे तालियां धीरे धीरे. तो ये जो हम कॉन्वोकेशन इसको कह नहीं सकते बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल रीजंस, पर दिस इज लाइक अ कॉन्वोकेशन. हिंदी में इसे कहते हैं दीक्षांत समारोह. तो दीक्षांत का मतलब मालूम है क्या आपको क्या है? आई विल ट्राई टू कीप माई स्पीच अ लिटिल शॉर्टर टुडे बिकॉज हमको पादरी को सुनना है, चेयरमैन सर को सुनना है. दीक्षांत का मतलब मालूम है आपको? दीक्षांत का मतलब है कि दीक्षा का अंत. तो आपका इस इंस्टीट्यूशन में पीआईएड्स में जो आपने दीक्षा ग्रहण करनी थी वो ग्रहण कर ली, इसीलिए दीक्षा का अंत यानी दीक्षांत. आपस में बात मत करो यार, यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट भाषण चल रहा है, सुनो ध्यान से. तो मुझे आपको क्लास में पढ़ाने का मौका तो मिला नहीं, तो यही मौका है डांट डपट भी लूं थोड़ा बहुत. तो मेरी तरफ ध्यान से सुनो. जो नहीं सुनेंगे उनको एब्सेंट मार्क कर देंगे और अगले साल फिर से वो टेकिंग सेरेमनी में बिठाएंगे. ठीक है? तो दीक्षांत का मतलब है दीक्षा का अंत. और मैं जो दे रहा हूं अभी, और जो पाड़ी जी देंगे, हमारे चेयरमैन सर देंगे. विशा जी बैठ जाइए आप आराम से, फिर से शुरू हो गया वो देखो. तो उसे कहते हैं उद्बोधन. तो दीक्षांत समारोह का उद्बोधन. तो उद्बोधन का मतलब मालूम है आपको क्या है? प्रेरणा देना, उत्तेजित करना, है ना? टू इरप्ट सम इमोशंस इन यू, एंड दैट इज व्हाई इट इज अ कॉन्वोकेशन एड्रेस. एड्रेस इज अ वेरी फ्लैट वर्ड इन इंग्लिश, but दीक्षांत समारोह का उद्बोधन is what we are listening to. हम लोग ज्ञानी लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं जिंदगी में. तो हमारे कुछ शब्द अगर आप सुन लेंगे तो उस हो सकता है कि उससे आपको प्रेरणा मिले, आप उत्तेजित हो अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए. ताली नहीं बजी? जबरदस्ती नहीं बजवानी चाहिए यार, दिल से बजनी चाहिए, है ना? तो मजा आता है, नहीं तो मजा नहीं आता है. अच्छा, ये हमारे लिए, फॉर अस इन पीएड्स फैमिली, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे बिकॉज वी इवेल्युएट अवरसेल्व्स कि हम कहाँ पे सक्सेसफुल रहे, कहाँ पे हमारा फेलियर हुआ, सो दैट नेक्स्ट जनरेशन को, नेक्स्ट स्टूडेंट को हम और अच्छे से शिक्षा दे सकें और अच्छे से दीक्षा दे सकें. दीक्षा देने में और शिक्षा ग्रहण करने में थोड़ा फर्क है. अब वो फर्क समझा नहीं पाऊंगा मैं क्योंकि समय की सीमा है, पर आप ये समझने की कोशिश करिए कि दीक्षा ली जाती है ना? गुरु से दीक्षा ली जाती है, तो वो दीक्षा का अंत हुआ है. बट हम वी प्लेज to ourselves and to all the future students of this institution that we will improve on the quality of education that we are imparting and the dedication and commitment that we have all towards making better architects, future architects, and making this nation to be a Viksit Bharat by 2047 or later than that. तो मैं आपके साथ में आज बहुत संक्षिप्त में, बहुत छोटे उसमें 5 इश्यूज या 5 कंसर्न्स आपके साथ शेयर करूंगा जो मैंने सीखे हैं जिंदगी में और मैं चाहता हूं कि मैं आपसे शेयर करूं. फर्स्ट इज, सबका ध्यान है ना यहाँ पे? मेरे को दिखाई नहीं दे रहे आपके चेहरे. सो मैं तभी चेहरे समझ सकता हूं, तभी मैं ध्यान लगा सकता हूं जब आप मतलब कुछ ताली वाली बजाएंगे या कुछ चिल्लाएंगे, हुटिंग करेंगे, तो समझ में आएगा कि आप सुन रहे हैं ध्यान से. सो हाँ, दिस इज वेरी नाइस, ये अच्छा था. तो इसमें पहला जो है ना, द फर्स्ट थिंग इज processing of whatever issues that you come across, processing of information that you have. I always talk of a triad that exists in education system, that is availability of information. Then the second is converting that information into knowledge, and then converting the knowledge from the knowledge that you have received into wisdom. So information, knowledge,
एंड विजडम का ये ट्रायड है। तो ये ट्रायड को समझने की आपको कोशिश करना है। हमने आपको इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल दीज डेज एट द फिंगर टिप, नेट पे बटन दबाओ आपको इंफॉर्मेशन आ गई, व्हाट्सएप आ गया, इंटरनेट आ गया, सो मेनी, नाउ एआई आ गया है, सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, बट दैट इज नॉट नॉलेज। You have to learn to process that information that is available to you, to convert it into knowledge. वो हमने आपको सिखाया है 5 साल। अब आगे की जिंदगी में आपको उस नॉलेज को that you have gained in this institution, you have to process to make it into wisdom and become wise people. And as architects, future architects, you have to understand that you have to think out of the box. You have to do lateral thinking. हर क्वेश्चन को, हर इशू को आपने क्वेश्चन करना है कि ये सही है कि नहीं है, और अपने दिमाग से, अपनी नॉलेज से उसको प्रोसेस करना है। और वो प्रोसेस जब आप करोगे तभी आप सक्सेसफुल आर्किटेक्ट्स बन पाओगे, तभी सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स बन पाओगे। यू विल बी अ ह्यूमन बीइंग एंड यू विल हैव अ गुड एग्जिस्टेंस एज प्रोफेशनल्स ऑफ दिस कंट्री। इसमें संत कबीर का एक दोहा याद आ रहा है मुझे कि रंगी को ना रंगी कहे। नारंगी मालूम है, एक फल होता है नारंगी, है ना, मल्टी कलर, लाल भी होता है, हरा भी होता है, पीला भी होता है, तो रंगीला फल होता है वो बहुत। तो कबीरदास जी कहते हैं कि रंगी को नारंगी कहें और बने दूध को खोया। दूध को गर्म करने से, दूध को प्रोसेस करने से खोया बनता है, और उसका नाम है खोया, एज इफ यू हैव लॉस्ट समथिंग, व्हेन यू हैव फाउंड समथिंग यू हैव लॉस्ट समथिंग। तो रंगी को नारंगी कहे, बने दूध को खोया, और चलती को गाड़ी कहें, देख कबीरा रोया। चलती को गाड़ी कहें, गाड़ी मीन्स वन हु इज स्थिर, ऐसा अटक गया हो कहीं पे, है ना, और उसका नाम है गाड़ी जो चलती है। तो चलती को गाड़ी कहें, देख कबीरा रोया। तो इससे मतलब क्या समझे हम कि डोंट गो फॉर बुकिश नॉलेज, डोंट गो फॉर व्हाट इज रिटन, डोंट गो फॉर द इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल टू यू, बट ट्राई टू प्रोसेस इट इनटू विजडम एंड यूज इट वाइजली। सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट पॉइंट इज। And second point, which is missing in Gen Z and the millennials to some extent, is patience. Patience and commitment. Our profession is a very long profession. 5 साल का लंबा profession है, उसमें this is a marathon race. I always say that you have to run a marathon race. आप जब marathon race लड़ते हो तो आपको commitment, patience, stamina, धीरे 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 आपको लड़ना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, तो आप जाके रेस जीतते हो। 100 मीटर डैश में खट से आप दौड़ जाओगे, it's a glamorous thing to win the fastest man on earth. But our profession is not like that. So we need patience. और आज की जनरेशन में attention span is 6 minutes in a class. And when you have a Instagram reel, so it is not even 13 seconds these days. And the more reels that we see on Instagram, the more lesser the time is. So you have to realize that patience and commitment will take you places. Will take you places. It will not. थोड़ा difficult है समझना और समझाना दूसरे को और अपने मन को और अपने दिमाग को कि पेशेंस एंड कमिटमेंट विल टेक यू प्लेसेस एज अ प्रोफेशनल। इसमें एक और कबीरदास की एक और दोहा याद आ रहा है मुझे कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। आप कितना भी पानी डाल लीजिए, 100 घड़ा पानी डाल लीजिए, फल तभी लगेगा जब ऋतु आएगी, जब सीजन होगा तभी फल आएगा। So you have to have that patience, and unless you have that patience, you have to understand the importance of patience with committed dedication. In your language, Delulu is not going to be the Solulu in your life. Delusion will not give solutions. My dear students, do understand that. So rise from that impatience that you have in your generation and try to become successful professionals with commitment and dedication. Next point is temptation, Maya, succumbing to temptation, succumbing to quick money, succumbing to unethical practices. So you need to have ethical practices, morals to succeed. एक और आज मुझे कबीर के ये दोहे याद आ रहे हैं, एक और सुनाता हूँ कि धीरे 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 गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। सर धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, हौले हौले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। गाड़ी मीन्स आपकी जिंदगी, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम इज द ड्राइवर, है ना, ऐसा ऐसा मान के चलो कि आपकी जिंदगी वो ड्राइव करते हैं। तो धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, हौले हौले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, गाड़ी मारी रंग रंगीली, गाड़ी मारी रंग रंगीली, पहियो लाल गुलाल।
और हाँकण वाली छेल छबीली बैठन वालो राम, धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरा राम गाड़ी वाले। तो ये माया जो है ना, माया माया मोहिनी जिसे कहते हैं, ये आपको लेके डूबेगी। जैसे अगर गाड़ी जितनी रंगीली बनेगी, पहिया लाल गुलाल, मतलब रेड फरारी होगी या जो भी होगा आपका, लैम्बोर्गिनी होगी, व्हाटएवर, ये आपको लेके डूबेगी धीरे धीरे पेशेंस के साथ में। डोंट सकम टू टेम्पटेशन, एंड व्हेन डोंट सकम टू टेम्पटेशन यू विल बी हैविंग ए एथिकल प्रैक्टिस व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ बीइंग ए सक्सेसफुल आर्किटेक्ट एंड अ प्रोफेशनल। इसके बाद आता है चेंज। ये मैं अपनी जिंदगी की प्रिंसिपल बता रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको लेना हो तो लो, नहीं लेना हो तो मत लो। आई एम जस्ट शेयरिंग माय वर्ड्स दैट आई हैव लर्नड इन दीज लास्ट 60 odd years. Change is always constant. We say, change is the constant in life. Change is constant in everything. The universe is changing by the second. Everything is changing by the second. And some people accept change as an opportunity. Some people don't accept change as an opportunity. They take it as discomfort. So you have to make a choice whether discomfort is unsettling you and creating roadblocks, or change is an opportunity. भगवत गीता के चैप्टर 2 में 12वां या 13वां श्लोक है, एंड इट गोज लाइक दिस कि देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति, which means that your body, since the day you were born, is undergoing a change every minute, and one day you will die after being born in this earth, and you will enter into another body through the permanent existence of your soul, है ना? That's what we believe all. सनातन में हम ये बिलीव करते हैं कि हम जो सोल है हमारा, वो परपेचुअल है। ये हमारी जो जिंदगी इस जमीन पे एक लम्हा है छोटा सा। So that is the change. So this श्लोक also talks of the same thing in भगवत गीता, कि हम जैसे कि हमारा देह और हमारी आत्मा अमर हैं, देह अमर नहीं है, constantly it is changing until it is dying. And those who have understood this philosophy will accept change as the constant in your life. And if you don't accept that constant in your life, you will never succeed in your life. This is what that Bhagavad Gita says. Now this brings me to the last part, which is my favorite part, to the existence of the soul. Sensitivity to existence, sensitivity to human existence, and this Mother Earth. है ना, हम जैसे कहते हैं कि परमात्मा एक है और हम सब उस परमात्मा के हिस्से हैं। All of the existence that is there on this earth, जड़ चेतन, चिड़िया, पक्षी, जानवर, सब चीज उस परमात्मा का एक हिस्सा है। और हमारा प्रयत्न ये है कि हम इस लाइफ में जो हमको मिली है, हम उस मोक्ष की प्राप्ति करें और उस परमात्मा में विलीन हो जाएं, है ना? ये हमारा सनातन धर्म का बेसिक प्रिंसिपल है। कबीरदास का एक और दोहा याद आ रहा है कि कबीरा कुआं एक है पानी भरे अनेक, कबीरा कुआं एक है पानी भरे अनेक, भांडे ही में भेद है पानी सब में एक। तो पानी इज द सोल, है ना? एंड बर्तन हर एक का अलग अलग है, जैसे हमारा जिस्म अलग है, आप अलग है, कोई जानवर है, कोई पक्षी है, तो भांडा अलग अलग है सबका, पर उसका जो सोल है, जो हमारा परमात्मा है, एक परमात्मा, परम आत्मा जिसके हम हिस्सा हैं, वो एक है। और अगर हम ये समझ लेंगे तो हमारा एग्जिस्टेंस पीसफुल हो जाएगा। ये सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, धर्म, जात पात के झगड़े खत्म हो जाएंगे, एंड वी विल इवोक अ सेंसिटिविटी इन अस टू एवरीथिंग, एवरी एग्जिस्टेंस, फूल, पत्ती, चिड़िया, जानवर, सबके लिए हमारा ही पार्ट है वो। So when we understand this concept of universal existence in this universe, in compliance with the universe, in coordination with the universe, not in contradiction with the universe. And when you understand this, you will become better human beings. And when you become better human beings, you will become better architects and better professionals. And more so, better architects. इसमें सेंसिटिविटी थोड़ी कम हो गई, ताली यार खत्म कर रहा हूँ, थोड़ी कम हो गई। तो अब इस यूनिवर्स जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हम अर्थ पे रहते हैं, we as architects are the biggest perpetrators of crime on Mother Earth. 48% of the crime that is committed against Mother Earth is done by architects through their infrastructure and built environment projects. इसमें विष्णु पुराण में एक श्लोक है, वैसे 18 पुराण है, मालूम है ना आपको?
शायद नहीं मालूम होगा, तो कभी आइएगा तो अपन पुराणों पे लेक्चर सुनेंगे। बट विष्णु पुराण में एक श्लोक सुनाता हूं मैं आपको कि समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुते तुभ्यम पद स्पर्शम शमस्म में। विच मीन्स दैट जब भी आप धरती पर अपने पैर रखते हो, जब आप बिस्तर से उठते हो, जब आप कुर्सी से उठते हो, जब आप धरती को छूते हो, तो आप पृथ्वी से क्षमा मांगते हो, क्योंकि जो पृथ्वी है उसके वस्त्र समुद्र है और उसके जो माउंटेन्स है दे आर लाइक द ब्रेस्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल वुमेन, एंड उनको मैं अपने पैरों से छू रहा हूं। तो हे पृथ्वी, विष्णु की पत्नी, विष्णु की कंसॉर्ट, मुझे क्षमा करना कि मैं इतनी पवित्र धरती को अपने पैरों से आपको छू रहा हूं। तो ये श्लोक पढ़ा जाता है जब भी हम धरती को अपने पैरों से छूते हैं। तो ये सेंसिटिविटी जगाइए अपने में, ये जो इच्छा शक्ति है आपको लोगों को रेस्पेक्ट करने की और हमारी धरती को रेस्पेक्ट करने की, इसको जगाइए। और जब आप ये जगाएंगे तो you will be more sustainable architects than ever. You will be more sensitive. You will be able to create and achieve the vision of our institute, which says we strive to achieve a meaningful, humane, and sensitive architecture. When you will be able to evoke this in your heart inside, you will be able to become successful architects. So ये 5 पॉइंट थे मेरे, आप इसको ध्यान में रखिए, नहीं तो यूट्यूब पे भी ये सुन लेना, कभी आप भूल जाएं तो बीच में। और मैं आपके सफल, सुखद, समृद्ध, गौरवान्वित और गरिमामयी जीवन की मनोकामना करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। Heartiest congratulations to all of you, and we are there for you anytime, anywhere. Just give a call. We're there for you to help you in your life, in your future life. You are part of this family and you'll always remain a part of this family. So come back to us whenever you need us. We'll be there. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Habib sir, for your inspiring words. Serve as a guiding light, helping students to discover their bright path for the future. Thank you, sir. I would now like to take this opportunity to introduce our Honorable Chairman, LTJSS. In the realm of educational visionary, our esteemed Chairman, Dr. Satish Chaturvedi ji, stands as a beacon of unwavering dedication and excellence. A distinguished scholar, he holds prestigious accolades, including a DLIT, PhD, and MA degrees in political science, history, and Hindi literature, along with LLB. His academic brilliance is further highlighted by a gold medal from Nagpur University. As the founder and chairman of Lokmanya Tilak Janakalyan Shikshan Sanstha, his leadership is both visionary and inspiring. His illustrious career also includes serving as a former Minister of Ex-Servicemen's Welfare, Employment and Self-Employment for the Government of Maharashtra, as well as the esteemed Guardian Minister of Nagpur District. The following lines reflects the life mantra of our respected chairman. A truly meaningful life is not measured by a personal achievement, but by the impact we create and the contribution we extend to others. With this brief introduction, I take great privilege in inviting our Honorable Chairman LTJSS, Dr. Satish Chaturvedi ji, to enlighten us with his precious words. चश्मा लिया।
आज के दीक्षांत समारोह के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रमुख अतिथि, जयपुर के अच्छी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन के प्रमुख पहाड़ी जी, संस्था की सेक्रेटरी श्रीमती आभा जी, आर्किटेक्चर कॉलेज को जिनके लीडरशिप की वजह से ये कॉलेज जिस मुकाम पर पहुंचा है, ऐसे हमारे हबीब खान जी, प्रिंसिपल मानापुरी जी, हमारे डायरेक्टर नानोटी जी, सभी सम्माननीय प्राध्यापक, सभी सम्माननीय पेरेंट्स और उपस्थित सभी मेरे विद्यार्थी मित्रों, हबीब साहब के भाषण के बाद मंच पे आना और बोलना, क्योंकि पिछली बार आपका भाषण हमने सुना थोड़ा अलग डायरेक्शन में था, और वो भी आध्यात्मिक विषयों को लेके ह्यूमन वैल्यूज को स्पर्श करते हुए आप बात कर रहे थे। मुझे याद है पिछली बार आपने यहाँ बड़ी लंबी कविता उर्मिला लक्ष्मण की जो पत्नी थी, जिसको बहुत कम रामायण में जिसका उल्लेख है, उसके संबंध में आपने बहुत अच्छे तरीके से, और आपको कंठस्थ थी पूरी कविता। ये सब चीज ये दर्शाती है एजुकेशन ये हमारी लाइफ की बेसिक की है, बेसिक कुंजी है। कोई भी देश, कोई भी समाज, कोई भी कौम, कोई भी फैमिली, अगर उसको ट्रांसफॉर्म होना है, बिना एजुकेशन के हमारे भाषणों से, हमारे प्रवचनों से, हमारे बोलने से वो ट्रांसफॉर्म नहीं होता, वो एजुकेशन से ट्रांसफॉर्म होता है। आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा पावर, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ा देश अमेरिका, जो देख रहे हैं हम लोग, अभी आज ही मॉर्निंग में ईरान के ऊपर उसने वार शुरू कर दिया। अभी 15 दिन पहले कोई राष्ट्रपति को वेनेजुएला से, वो राष्ट्रपति भवन से उठा के अमेरिका में लेके जेल में डाल दिया, वो देश उनके हाथ में आ गया। ये तो एक पॉलिटिकल पावर की बात हुई, लेकिन अमेरिका जो इतनी बड़ी 30 ट्रिलियन, जो उसका 30 ट्रिलियन का जो इनकम का जो सबसे दुनिया का अमीर देश है, हम तो आज 4 ट्रिलियन पे ही हमको लग रहा है हम जगत विश्व गुरु हो गए हैं, लेकिन वो 30 ट्रिलियन वाली कंट्री, चाइना भी उससे और 10 नीचे 20 पे है, और ये सब बाकी की कंट्रियां 10 के नीचे है। तो जो वर्ल्ड पावर है अमेरिका, उसका सीक्रेट क्या है? अमेरिका में कोई मिनरल्स नहीं है, अमेरिका में कोई कुओं के अंदर ऑयल नहीं है कि पानी की जगह तेल निकल रहा है, जो गल्फ कंट्रीज पूरी रीच हो गई, क्योंकि पानी की जगह ऑयल निकलता है, मिनरल्स निकलते हैं, कहीं गोल्ड माइंस है, किसी के पास में आयरन ओर है, तो वो कंट्री रिच होती है, नेचर उसको दे रहा है। अमेरिका के पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, ऑयल के कुएं नहीं है, उसके पास वर्ल्ड पावर वो इसलिए बन गया कि वहां वर्ल्ड की बेस्ट एजुकेशन है। उन्होंने एजुकेशन और रिसर्च पे जो वो पैसा खर्च करते हैं, हम उसमें कभी बाकी देशों का बजट और उसका रिसर्च का हमने अगर देखा, हम तो समझ में आएगा कि दुनिया में
तब ये मिसाइल्स, ऐसे ऐसे वेपन्स जो सोच नहीं सकते, क्योंकि अब ये जमाना चला गया, वो घोड़े के ऊपर बैठे हैं और तलवार लेके लड़ाई हो रही, या सामने बंदूक से दूसरे को मार रहे। अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा, अभी कुछ दिन पहले, 2-4 महीने पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई, कोई उसमें गोलीबार नहीं हुआ, लाखों सैनिक बैठे इधर के उधर के, कोई लड़ नहीं रहे। और जो वार हो रहा है वो पूरा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से, जीपीएस के ऊपर में उन्होंने उसका टारगेट डाल दिया, बटन दबाई, मिसाइल ने उसको उड़ा दिया। आज जो हुआ ईरान में, अब आप देखो दुनिया क्या चेंज हो रही है। हर मिनट, जो आपने कहा, ये जो जगत है, ये जो वर्ल्ड है, हर मिनट चेंज हो रहा है, हर सेकंड बदल रहा है। हम बदल रहे हैं, आप बदल रहे हैं, मौसम बदल रहा है। अभी शाम हो रही है, अभी रात आ रही है, रात आ गई, सुबह आ रही है, अभी गर्मी आ गई, अभी सर्दी आ गई, फिर बारिश आ गई। मौसम बदल रहा है, दिनों रात बदल रही है, हमारी आपकी उम्र बदल रही, चेहरे बदल रहे। आप 10 साल पुरानी फोटो देखोगे, बोलेगा ये इस आदमी की फोटो है क्या? इसकी 20 साल पुरानी फोटो देखो, आपको ताज्जुब होगा। चेहरे बदल रहे हैं, लोग बदल रहे हैं, हर चीज यहाँ चेंज हो रही है। आपने पौधा लगाया, वो धीरे से बड़ा हुआ, ये हो गया, बाद में खत्म हो गया। तो ये जो चेंज और जो चेंज नहीं हो रहा है, उसको हम सनातन बोलते हैं। सनातन का मतलब क्या है? सनातन संस्कृति, सनातन धर्म। सनातन का मतलब है जिसका अंत नहीं हो, जो अनएंडिंग है, अनंत है, जो कभी खत्म नहीं होने वाली चीज है, जिसको हम बोलते हैं सत्य। क्यों बोलते हैं सत्यम शिवम सुंदरम? कि भगवान सत्य इसलिए है क्योंकि वो हमेशा परमानेंट है। परमानेंट चीज ही ट्रुथ होती है, जो चीज खत्म हो रही वो सत्य नहीं है। तो हम जहां हर मिनट चेंज हो रहे हैं, तो हमको अपने आप को भी बदलना पड़ेगा, हमको उसके हिसाब से एडजस्ट होना पड़ेगा। हमारे एजुकेशन की टेक्नोलॉजी पूरी बदल रही है। पुराना आर्किटेक्चर और आज के आर्किटेक्चर में जो आप जिस तरीके से ग्राफिक और इसमें जो चेंजेस आए हैं, जो कंप्यूटराइजेशन हुआ है, पुरानी आपके नक्शे बनाने की सिस्टम और आज का जो कुछ आपका लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आप एप्लीकेबल आप कर रहे हैं, और आगे चेंजेस आएंगे। और अभी ये आईटी और ये कंप्यूटर और ये सब, इसके बाद में अब तो एआई जो है वो सबके ऊपर हो गया। अभी सब डर गए एआई से, और एआई कोई दुनिया की ताकत अब उसको रोक नहीं सकती। एआई से आपका पूरा ट्रांसफॉर्म हो रहा है हर चीज। एक आध बार कोई बोलेगा एआई से ही प्लान बना लो, एआई यही आर्किटेक्ट का नक्शा बना दे। अभी एआई जब फिल्म के स्टोरी लिखने तक पहुंच गई, फिल्म के गाने लिखने तक पहुंच गया, आपके स्पीचेस लिखने तक पहुंच गए, तो ये पूरा ट्रांसफॉर्म हो रहा है और ये रुकेगा भी नहीं। और इस पर इतना रिसर्च हो रहा है, चाइना और अमेरिका इतना आगे गए हैं इसमें कि बियॉन्ड इमेजिनेशन है। हम लोग तो अभी रेस में बहुत पीछे है, अभी हमको बहुत स्ट्रगल करके उनके बराबरी पे खड़ा होना है। और ये खड़े होने के लिए एजुकेशन और हमारा विल पावर, बेसिक, अगर आपको यशस्वी जीवन चाहिए, आपको सक्सेसफुल लाइफ चाहिए, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं फाइनल ईयर के 5 साल, हमारे यहाँ के टीचर्स ने, हमारे प्रोफेसर्स ने आपको शेप में लाया, आपको नॉलेज दिया, आपको यहाँ की एक कल्चर सिखाई, आपको ऑलराउंड डेवलपमेंट आपकी पर्सनैलिटी का डिफरेंट डिफरेंट फोरम्स के ऊपर आपके प्रोग्राम्स लेके करने की कोशिश की। 5 साल में आपको पूरा ऑलराउंड डेवलपमेंट करके, और आपको दुनिया के अंदर आप आर्किटेक्ट तैयार होके और आप मैदान में एंटर होके और स्ट्रगल करके अपनी जगह बनाए। तो सक्सेसफुल लाइफ के लिए बेसिक जो चीजें अभी जो बताई हबीब साहब ने, कि आपको आपका हेल्थ तो बहुत जरूरी है, बिना हेल्थ के तो हर चीज बेकार है। देख लिया अंबानी ने पूरी दुनिया, वीरू भाई अंबानी ने पूरी बड़ी एम्पायर क्रिएट की, पर 60 ईयर की एज में हेल्थ इग्नोर होने से वो एम्पायर का यूज नहीं कर पाए।
60 साल की उम्र में ही चले गए। वो झुनझुन वाला का हम लोग सुनते हैं कि उसने हजारों करोड़ के शेयर में कमाया और 50 साल की उम्र में गया। आपको आपकी फैमिली, आपको आपकी कंट्री की सर्विस करना है, आपको परिवार के साथ रहना है, आपको ये बनाई हुई ऊपर वाले की जो ये जन्नत है, ये जो दुनिया है, इसको एंजॉय करना है। आप जो पैसा कमाओगे, जो आप शोहरत कमाओगे, जो आप लाइफ में जो अर्न करोगे, आपको पेरेंट्स के साथ रहना है, बच्चों के साथ रहना है, दोस्तों के साथ रहना है। हेल्थ ये आपका सबसे बड़ा, पहली चीज हेल्थी माइंड में ही और हेल्थी बॉडी में ही आप आगे का आपका पूरा फ्यूचर सुरक्षित रहता है। तो हेल्थ ये प्राइमरी चीज है। हेल्थ आपकी इग्नोर हो गई तो सब चीज गई काम से। कई लोग पढ़ाई में टॉप करते हैं और इतना पढ़ाई में रहते कि हेल्थ इग्नोर होती, जिम नहीं जाते, वॉक नहीं करते, योगा नहीं करते, तो वो लाइफ की सबसे बड़ी जो सक्सेसफुल लाइफ का जो फैक्टर है उसको मिस कर देते हैं और उनका लाइफ सक्सेस नहीं हो पाता। हेल्थ है, फिर आपकी मेंटल हेल्थ। मुझे डिप्रेशन हो रहा है, बाबूजी आज मैं बहुत नर्वस हूं, अरे आज मेरा मूड ठीक नहीं है, आज मेरा दिल नहीं हो रहा किसी से बात करने का, आज पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ मुझे सब डार्क डार्क लग रहा है, आज मुझे डिप्रेशन हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, नर्वसनेस हो रही है। ये जो आपको वर्ड है, जो शब्द हैं, ये आपके सक्सेसफुल लाइफ के सबसे बड़े एनिमी हैं। आपकी डिक्शनरी से फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, निगेटिविटी, नर्वसनेस, मूड अच्छा नहीं, स्ट्रेस बहुत हो रहा है, ये सब अपनी डिक्शनरी से निकालोगे तब आप चैलेंजेस एक्सेप्ट करके दुनिया के बड़े सक्सेसफुल आदमी के रूप में आप इमर्ज हो सकते हैं। आपको आर्किटेक्ट बनने के बाद भी आपको आपकी लाइफ, आपको ऐसा व्यक्ति बनना है कि लोग आपको देख के आपको मिसाल समझे, तब तो सक्सेसफुल लाइफ है। आप कलाम का लाइफ देखिए, आप लाइफ पढ़िए, ये आर्किटेक्चर का सिलेबस अपनी जगह है, पर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको धर्म भी समझना है, आपको जो बड़े महापुरुष हो गए उनको भी समझना है और उनकी क्या कहानी है वो समझना है। अब्दुल कलाम जो आज हमारे हिंदुस्तान की, जिसने ये सब मिसाइल और आज जो हमारा डिफेंस है, ये कलाम का कंट्रीब्यूशन है। अब्दुल कलाम इंटरव्यू के लिए गए एनडीए अपने देहरादून में और वहां वो सिलेक्ट नहीं हुए, उनके पास लौटने का किराया नहीं था, वो इतने डिप्रेशन में आए, क्योंकि डिप्रेशन के बाद की स्टेज होती है सुसाइडल टेंडेंसी। मेरे को एक गर्लफ्रेंड ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, मेरे को टीचर ने डांट दिया, मेरे को पेरेंट ने मेरी बात नहीं सुनी, मेरे को इसने मेरे को ह्यूमिलेट कर दिया, 4 लोगों के सामने बोल दिया, अब मैं पूरी दुनिया से, अब मेरा इंटरेस्ट नहीं, मेरी जो भगवान ने इतनी बड़ी लाइफ मुझे दिया है, 84 करोड़ योनियां घूमने के बाद में मनुष्य योनि में आया हूं, ह्यूमन बॉडी मुझे मिली है, मेरे से पूरी सोसाइटी को, फैमिली को, नेशन को एक्सपेक्टेशन है और मैं अपनी लाइफ एंड करने की सोच रहा हूं। तो सुसाइडल टेंडेंसी नेगेटिविटी से क्रिएट होती। और यंग बच्चों में आज तो देख रहे आईएएस आईपीएस, कोई गोली मार लेता, कोई बिल्डिंग, कितने प्रेस में न्यूज हम लोग पढ़ते हैं, ये नेगेटिविटी से आता है। तो अब्दुल कलाम जैसा व्यक्ति में वो ऊपर बिल्डिंग पे गए और उनमें सुसाइडल टेंडेंसी आई कि मेरे पास किराया जाने को नहीं है, यहाँ सिलेक्ट नहीं हुआ, मेरी लाइफ में क्या होगा, अब मैं यहाँ से कूद जाता हूं। वहां के प्रोफेसर ने जाके उनको पकड़ा, उसको लगा बच्चा इतना अपसेट क्यों है, और उनको समझाया कलाम को, और कलाम को ये बात बताई कि आप उनको नॉर्मल किया, 2 दिन अपने पास रखा प्रोफेसर ने, उनको लौटने का किराया दिया और नॉर्मल होने के बाद अब्दुल कलाम को देहरादून से वापस भेजा। आज अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति नहीं, साइंटिस्ट नहीं, तो आज इस देश की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ के रूप में आज अब्दुल कलाम का नाम जाना जाता है। तो पॉजिटिविटी से अगर वहां वो एंड हो जाता तो हमको पता भी नहीं चलता अब्दुल कलाम कौन थे। तो लाइफ में आपको ह्यूमन वैल्यूज, आपका विल पावर, आपकी स्ट्रेंथ, आवाहन, चैलेंजेस एक्सेप्ट करो।
चैलेंज से आप डरो मत, आपको इजी लाइफ, हर चीज मुझे मिल जाए, हर चीज नहीं मिलेगी। भगवान को भी आने के बाद बहुत तकलीफ हुई, प्रभु राम को भी 14 साल वनवास में रहना पड़ा, कृष्ण भगवान को भी बचपने से मारने के लिए डेविल्स आते थे, राक्षस आते थे। तो भगवान भी आने के बाद उनको यहां जो भी आया है उसको तकलीफ होनी है, उसको सुख भी मिलेगा दुख भी मिलेगा। आपको दोनों के लिए तैयार रहना है। मेरे को खाली सुख मिले, दुख मिलेगा तो मैं टॉलरेट नहीं करूंगा, तो आप लाइफ जी नहीं सकते। आपको दोनों को बहुत प्रेम से एक्सेप्ट करना है। कबीरदास जी की बात किया हमारे हबीब साहब ने, तो आपको तो लोगों के साथ ऐसा रहना है, सबके साथ मिलजुल के रहना है। ये हमारा देश, जब तक 140 करोड़ लोग भारत माता के जब हम जय बोलते हैं, तो ये पूरे भारत माता जब हमारी एक है तो 140 करोड़ हमारे रियल ब्रदर्स हैं। माँ एक होगी, भाई अलग कैसे हो जाएंगे? अगर हम सब भारत माता के बेटे हैं तो हमें डिफरेंशिएशन, हम गुलाम इसलिए हुए थे, हम आपस में बट गए थे। हम बंटवारे के बाद में हम गुलामी में गए। मैं तो हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, मेरे पीएचडी डीलिट के सबका विषय ही हिंदुस्तान की स्लेवरी और इंडिपेंडेंस है। हमारी गुलामी का मेन कारण था हमारा आपस में डिवीजन। और हम अगर 140 करोड़ रहेंगे तो इस देश को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। 100% ये वर्ल्ड पावर के रूप में इमर्ज हो रहा है और इमर्ज होगा। तो कबीरदास जी ने बोला है हमारे आपके सबके लिए, कबीरा जग में यूं रहो, कबीरा जग में यूं रहो, जो रसना मुख माय। रसना यानी जीव, जिस तरह जीव मुख में रहती है, मुंह में, हमारे मुंह के अंदर जीव जिस तरह रहती है, कबीरदास जी ने कहा आप सोसाइटी में उसी तरह रहो। खाती घी और तेल नित, फिर भी चिकनी ना है। रोज हम लोग कोई डीप फ्राई आइटम खाते हैं, हम पेस्ट करते हैं, कभी जीभ को साबुन से धोते हैं क्या? हम इतनी ऑयली चीजें खाते हैं, करी खाते हैं, तरी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, लेकिन उसके बाद में कभी जीभ को साबुन लगाते किसी को देखा है? तो जीभ जो है सब खाने के बाद भी चिकनी नहीं होती। वो जिसके साथ भी रहेगी उसको चिटकने नहीं देती। तो आपको हर एक के साथ रहना है और जीभ की तरह रहना है। और हमारे जो दांत हैं, ये जो 32 दांत हैं हमारे, दांतों के बीच में जीभ को कैसे रहना, कबीरदास जी का वो भी इशारा है। ये 32 दांत नुकीले हैं और 32 संख्या अजीब अकेली है। एक बार जीभ और दांत में झगड़ा हो गया और 32 दांतों ने बोला हमारी संख्या 32 है, तू किसी को गाली बक देती है, घूसा तो दांत पे पड़ता है, हम लोग बाहर आ जाते हैं, जीभ गाली देके अंदर चली जाती है, और मारने वाला जो है जब वो घूसा लगाएगा तो दांत के ऊपर पड़ेगा। तो दांतों ने कहा कि भाई तूने ज्यादा होशियारी की तो हम तेरे को फिर तेरी जगह बताते, हम 32 है। जीभ ने कहा आपकी संख्या कितनी है उससे मुझे मतलब नहीं, पर एक बात याद रखो, आप काटने का काम करते हो, आप डिवाइड करने का काम करते हो, आप चीज का विभाजन करने का दांत काम करते हैं, आप 32 दांत ब्रेक करने का काम करते हो। जीभ का काम मिलाना है, मैं मिलाने का काम करती हूँ। कुदरत ने दांत पैदा होने के समय नहीं दिए, पर जीभ दी। दांत बाद में आए, नहीं तो कोई हिंदू दुनिया की माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाती, दांत अगर पैदा होने के साथ आते तो। दांत बाद में आते हैं। और 60-65 साल के बाद चॉकलेट खाए तो और भी जल्दी दांत पहले जाते हैं, जीभ आखिरी तक रहती है। जो डिवीजन करेगा, जो बांटेगा, उसका नाश वो आएगा, बाद में जाएगा पहले, उसका नाश होगा। और जो मिला के चलेगा वो सनातन, वो पहले भी रहेगा, आखिरी तक रहेगा, वो जीभ की तरह रहेगा। तो आपको हमको सोसाइटी में सबके साथ मिलके चलना है, एक दूसरे के साथ भाईचारे से रहना है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेन जो आइटम है वो फ्रेटर्निटी है, भाईचारा है। भाईचारे का मतलब है हर आदमी को अपना भाई समझो। और ये फीलिंग आने के बाद
ये नेशन आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। मेरी आपको बेस्ट विशेज है, आप एजुकेशन लेके सक्सेसफुल लाइफ लीड करो। स्काई इज लिमिट है, कोई लिमिट नहीं। आजकल सीओ वगैरह के सैलरीज आप सोचोगे और कौन कौन से फील्ड में जा सकता है उसका भी कोई नेम नहीं है। आपके टैलेंट से आप कहीं तक भी जा सकते हो, और आपके अंदर टैलेंट की कमी नहीं है। आपके ब्रेन का बहुत छोटा पार्ट आप यूज कर रहे हो। इंडियन आदमी के टैलेंट्स, अमेरिका में जो लोग काम कर रहे हैं, यूरोप में जो बच्चे काम कर रहे हैं, आज हमारे इंडियन सीओज की सैलरी 5-5, 6-6 करोड़ रुपए महीना है। लेडीज, हमारी लड़कियां जो वहां काम कर रही हैं, जो सीओ हैं बड़े बड़े कंपनीज की, उनके सैलरी सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। आपकी स्काई इज लिमिट है। आप लाइफ में आगे जाओ, विल पावर के साथ चलो। आखिर की बात करके मेरा भाषण खत्म करता हूं। हर आवाहन को आप स्वीकार करो, चुनौती को स्वीकार करो। तूफानों से तूफानों से डरो मत, तूफानों से डरो मत, सैलाब पे वार करो। तूफानों से डरो मत, सैलाब पे वार करो। भूल के भी नाविक के घर का पता मत पूछो, भूल के भी मल्लाह के घर का पता मत पूछो, तैर के दरिया पार करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। That was truly motivating, sir. Thank you for your charismatic words. Now, let me take this opportunity to introduce our today's chief guest, Dr. Narayan Prasad Padi. We are privileged to welcome our chief guest, Dr. Narayan Prasad Padi, Director of Malviya National Institute of Technology, Jaipur, and Triple IT Kota. He is a chair professor at IIT Palakkad Technology I Hub Foundation. He is a professor and institute chair in Department of Electrical Engineering, IIT Roorkee, a distinguished expert in power systems and smart grids. Dr. Padi has published over 300 research papers, including 75 plus IEEE transactions with 13,700 plus citations. He has secured major research funding exceeding INR 200 million, supervised numerous doctoral scholars, authorized 6 books, developed laboratories and patents, and contributed to NPTEL courses. Dr. Padi has held visiting positions at eminent international universities and established research engagements and institutional tie-ups with universities like UK, US, Denmark, Italy, and Canada. A fellow of premier professional bodies including Institution of Engineering and Technology UK, the Indian National Academy of Engineering and Institution of Engineers India. He has received several prestigious honors such as the IETE Bimal Bose Award 2025 and the Alexander von Humboldt Research Fellowship. With this brief introduction, I take great privilege in inviting our chief guest, Dr. Narayan Prasad Padi, to enlighten us with his valuable words. Welcome, sir. Yes, I. Namaskar. Namaskar and very good evening to all the dignitaries on the dais, and specifically Chairman LTJSS Dr. Satish Chaturvedi ji. We have Secretary LTJSS Srimati Ava Chaturvedi ji. Then we have Director LTJSS Dr. Vivek Nanoti ji. We have Director PIADS Architect Habib Khan ji, and dignitaries on the dais, guests, faculty,
belongs to the department of PIADS, parents of all the graduating students, and at the end, all the graduating students of PIADS. What an immense pleasure to stand before you on an occasion through which graduate students are not only going to complete their academic journey, but they are going to create an ecosystem not only for the country, for the world to grow. To start with, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्व मम देव देव. With this, I wish and request all the graduating students, before they complete the journey tonight, it is an opportunity for all of us to remember all the school teachers, those who gave us education starting from nursery to their 5-year program. So a one round of huge applause to all the teachers, those who made you eligible to be part of this tonight event. But without forgetting your mother and father, who happened to be your first teacher. And I have been told by Habib Khanji that even the parents are invited to be part of tonight's event. So I once again request all of you to thank your parents with a huge round of applause and thank them the sacrifice, the contribution they made you stand today before an August gathering. Now, first of all, I do not know, but I'm very sure both Habib Khanji and Satish Chaturvedi ji must have chosen today being the oath taking ceremony day of all graduating students, happened to be such a wonderful day, that is 28th February 2026, happened to be the Science Day of this country. Ignorantly, this oath taking ceremony is happening in a day when we recognize C.V. Ramanji's contribution in Raman effects. Now, both Habib Khanji and Satish Chaturvedi ji motivated you to not only being a human being, but how you can be a wonderful human being. The theme of today's Science Day is Women in Science. And today I could see that most of the graduating students, almost 50% of them, happen to be women graduates. So I congratulate the leadership of PIADS for making a batch graduating and motivating most of the women graduate to succeed. Now, there are a couple of things we need to understand, though Satish Chaturvedi ji has already touched upon something related to wellness. Now, for me, the definition of a graduating student, a successful graduating student, is one who learns how to accept not only success, but also to accept failures in life. So, my request to all of you, please develop the strength within yourself to accept frequent failures in your life. The moment you start learning accepting failures, I think no one can stop getting success in your life. Success will continue to come to you once you start learning
how to accept failures in life. One important thing I like to highlight here, always try to dream bigger. Let us not, I'm not a person who always request my student to be extremely humble and not to dream bigger. It is your responsibility to dream bigger and try to reach to the moon in your life. But please do not leave the earth when you are dreaming to be in the moon. So पाँव को आसमान से रखते हुए आप एक्चुअली चंद्र के पास पहुंचने की कोशिश करिए, लेकिन पाँव को एक्चुअली आसमान से, अर्थ से एक्चुअली छोड़िए मत. So once you are intact with the earth and dreaming bigger, I think no power in this earth can stop you to become a successful entity. Now, many times among your peers and within your family, sometime actually we have been pulled back not to dream big. Whenever you start dreaming bigger, we have been told actually don't sapna mat dekhiye, don't dream big, just be humble and accept whatever comes on the way. But now the time has come. I am an old school student where we are extremely satisfied what we do in everyday life. But to my younger graduates, I like to advise in a different way, which is not in the line the way my grandparents and my parents taught me to become very simple and satisfied. I want you people to imagine beyond your capacity, and you will be very surprised after 30 to 40 years the big things that you have dreamed and your peers told you that it is not possible. I think one day you will achieve that goal. So once you start dreaming, then the dream become a reality for sure in long time to come. And many times, when you start dreaming and when you reach to the particular point, you believe that actually I have achieved my goal and never get completely satisfied. And that will be the beginning of another lap of your life or another journey of your life. So, the ultimate goal, once you achieve, and you can consider that to be the starting point of your life. So, with these three important points, first of all, try to dream big, but don't leave the ground. The second important point of time, there is nothing wrong in dreaming big. One day you will be the person who may looks like a crazy person today, but tomorrow it become a reality. And the third thing, once you achieve your target, please consider that to be the starting point of your journey. Now, one important thing that in any academic career of any graduating students, Habib Khanji has mentioned that you have to maintain ethics and integrity to become successful in life. I think it is true that it may not be today, but in a long run, if you are a bit disciplined, I think the success will really follow you very quickly and you become one of the wonderful person in this earth. Now, to me, this is a great opportunity for you to graduate today. And please see to that you are not only taking a degree and getting a job to survive, but always in your life, try to connect your each and every day to day activity to society. That means whatever little you do, if you can help the society to enjoy your contribution, I think there is nothing like this. So I think architect is one of the field which is very close to my heart. And perhaps I wanted my son to be an architect. I could not succeed. But if possible, my younger son could be an architect. I do not know. But to me, architect are those individuals who not only create new things, but who also create a beautiful life around them. To me, sustainability, try to protect the earth to the best possible way, and you can be more creative, protecting the earth to the best possible way, and also provide a better life to every individual to live. So when I was sitting in this small, space, a quadrangle, I was just recalling, thank you Habib Khan ji for creating such a wonderful space. मैं एक तरफ से थोड़ा केरला चला गया था. केरला की जो
राजा की जो मकान होता था वो इस तरह होता था एक्चुअली। उसके बाद मैं नागपुर में तो हूँ ही, but it has also taken me to the eastern India from where I belongs to. Most of the houses of in Odisha happen to be of this nature in a very small size. And almost for last 20 years, we converted those residences into concrete. So I think this is a small temple to me, such a wonderful place, and you will carry this point of your life as a great memory. And each and every time, whenever you are in trouble, please remember that you have done enough to your career and you will be successful for sure. And do not look into the unsuccessful career of your life. Try to learn the unsuccessful stories as a success story and turn into a life which will be a wonderful happiness, and success stories can be created for you in a long time to come. Now, the last one thing I wanted to mention, whatever you do in your life, I mean, it's very difficult to exercise, but try to identify an opportunity to be very, very happy and try to create a wonderful friend circle and an ecosystem so that not only you get benefit out of it, but also you contribute to the society at a larger extent. Now, once again, I wish all the graduating students to have a very, very successful future ahead in their life. And I'm confident that not only you, but you will play a key role to impact your contribution to the society in a way you can make this country big sit in 2047 or 2050 to come. With this note, I once again congratulate you, your teachers, and your family for this graduating day or oath ceremony day. Wish you all the very best in your life. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat. Yeah. Sir, you are requested to just stay because this oath will be Yeah, given. yeah. You will be announcing. Just. Thank you, sir, for your captivating words. It's not the oath that earns our trust, but the person who honors it. Now, I request our chief guest of today's program, Dr. Narayan Prasad Padhi, to lead the budding architects from PIADS into the promise. They're supposed to stand. Yes. So I request all the graduating students to please stand. You can fill this. Yeah, yeah. Okay, thank you. And second, I request all the graduate students to keep your hand on the heart. So I'll be reading the sentences, so please follow me. Humbly and proudly, I, architect, take your name, profess my competence under the discipline of architecture. Upon my honor, I promise unending devotion to the task of continually studying, learning, seeking, experimenting, that I may become ever better educated and trained for my work. Upon my honor, I promise to my community undeviating adherence to the ideal service to my fellow man as the goal of my effort, that I may honestly and fully learn
my living, my right to live among them. Upon my honor, I promise to maintain that integrity in practice which will ensure to each client the finest possible stewardship of his interest. Upon my honor, I promise in the execution of every commission to strive to create beauty as well as order, character as well as safety, spiritual value as well as convenience. Upon my honor, I shall strive to achieve meaningful, human, and sensitive architecture which respond to context, climate is rooted to its land and is an integral part of its people. Upon my honor, I shall strive to achieve an architecture which respect tradition and culture of the people of the land for whom it is being built. Upon my honor, I promise to join with my fellow architect to make our profession of greatest possible usefulness and benefit to our society, to share and disseminate all valuable professional knowledge and to pass on to the succeeding generation the full and fine discipline of our profession, enriched because of my dedication. Congratulations, and you can take your seat now. I will be happy if you can create some noise. Congratulations again. Thank you. Thank you, sir. I am confident that all the students will uphold these commitments and they are prepared to shape a bright and successful future. As we approach towards the end of a program, I would like to convey and congratulate my best wishes to the graduating batch of 2026. It has been an amazing journey with you all. I hope that you, the young leaders, will uphold the value of this institute and keep PIADS flag flying high while discharging your duties honestly and impartially. I now request Professor Anuya Killedar Mohoril, Dean Academics PIADS, to deliver a formal vote of thanks. Good evening, respected dignitaries, parents, faculty members, and my dear friends and dear students. As we draw to the formal segment of the PIADS oath-taking ceremony 2026 to a close, it is my absolute privilege to propose the vote of thanks on behalf of Priyadarshini Institute of Architecture and Design Studies, NAGPUR. First and foremost, I would like to extend deepest gratitude to our chief guest for today, Dr. Narayan sir, Director MNIT Jaipur. We are truly honored
that you took time out from your busy schedule to lead our budding architects into the promise today. Your speech and your gems of words about how to live the life, about wellness, about strength of mind was truly inspiring. My sincere thanks to the pillars of our institution, our Honorable Chairman, Dr. Satish Chaturvedi ji, whose visionary leadership continues to foster a merit-based environment here in PIADS, Honorable Secretary Ma'am, Abha Chaturvedi Ma'am, whose guidance again helps us provide quality education to all the institutes under the umbrella. We are also deeply grateful for the continuous support of Dushan sir as well as Sheetal ma'am. Um, we hope to have them next year. I would also like to express a profound appreciation to Director LTJSS, Sri Abhijit Deshmukh, Director Engineering LTJSS, Dr. Vivek Nanati, and Director Architecture, of course, LTJSS, Architect Habib Khan, for being the backbone of architecture education here at PIADS and nurturing our creative minds. And to our principal, Professor Nishan Manapure, the navigator of this flagship, for his constant encouragement. Today has been a day of immense pride. I want to extend our collective congratulations to all our achievers today, from the faculty and student teams behind the wonderful Confluence magazine, to our brilliant patent awardees, and our outstanding academic toppers and best on outgoing students. Your dedication is the testament to the pursuit of greatness here at PIADS. To the parents present here today, thank you for your unwavering support and for entrusting us with your child's education. And finally, to the graduating batch of 2026, thank you for the amazing journey that you have let us be a part of. Today, we celebrate your incredible 5 years architectural journey. We have watched you grow from enthusiastic freshmen to through the 5 years architectural journey into skilled architects and ready to step out into the professional world. We applaud your unwavering passion, dedication, and creativity. And as you embark on the path of growth, we hope that our young leaders, will uphold the value of the Institute and keep the PIADS flag, as Pratik sir said, flying high while discharging your duties honestly and impartially. May your future be as inspiring as the building projects you have envisioned and are going to bring to life. Batch of 2026, your time at PIADS was the foundation. Now it is time to build your masterpieces. Go out there and capture the world. Thank you, everyone who made this evening unforgettable, and please definitely enjoy the cultural program to come. Thank you very much. Thank you, Professor Anuya Mohorin. I now request all faculty members to come on the dais for the formal photograph. I also I I also request students of BArch, MDes and MArch of batch 2026 to kindly move to the dais. खुर्ची ला ले खुर्ची ला ले खुर्ची ला ले वो देख प्लास्टिक दो ला ले I request students of PIADS, MDes and MArch of batch 2026 to kindly come on the dais for formal photograph.
ये है ना लाइव के लिए। I request Professor Nikhil Vasade, Lead Administration PIADS, to take the charge for next announcements. ऊंचे लोग बैठ जाओ। नो सर, सर यू कैन, नहीं नहीं पीछे खड़े रहो, कुर्सी पे चढ़ जाओ ना, गिरो मत सिर्फ। चढ़ना चढ़ सकते हो, मैं खड़ा रहता हूँ, मेरे पे पैर पे चढ़ जाओ, 5 साल पैर दिए, अभी पैर दो। और देवांग, वेदांत, त्याला देऊन दे, वेदांत देऊन दे। Guys can go back and stand. पीछे वाले के फोटो अच्छे आ रहे हैं। गर्ल्स यू कैन कम हियर ऑन दिस साइड। कॉर्नर के फोटोज नहीं आने वाले हैं तो या गर्ल्स कम हियर। Boys possible if you can climb up. So ठीक है, सब पेरेंट्स अपने आंखों को सितारे को देख सकते हो। ओके, थैंक यू। So we have, first we'll have the official photograph, then we'll throw the sash in the air. अपना अपना sash ही घर लेके जाना है। On 3 you will throw the sash in the air. ठीक है? First we'll have the formal photographs. Okay? Cameraman? Okay, ready everyone? Hold your sash. Faculties be ready, ये सब आपके सर पे गिरने वाला है। Okay? On 3. हाँ अभी। Okay, I'm starting. 1, 2, 3. Once more.
वंस मोर किसी का फोटो नहीं आया सर। सैज पकड़ लो अपने अपने। अब जा रहे हैं बच्चे, आखिरी एक बार फोटो खींच लेते हैं और एक। तो आगे सबके सैश ऊपर लटक नहीं गए ना किसी के? ओके, लास्ट है। रेडी? 1 2 3। थैंक यू गाइस। So guys, you guys can stay here for more photos if you want. Thank you so much. We'll go down. With this, we come to the conclusion of the formal segment of the PIADS book-taking ceremony 2026. I now request our volunteers to kindly escort our respected guests and dignitaries to the VIP room. Up next, we have the cultural program, which will be begin shortly. I invite all parents and students to stay back, interact with each other, and capture some wonderful moments through photographs. Thank you for all being such a wonderful and supportive audience. With the gratitude in our hearts, we conclude today's program. Have a wonderful evening ahead. Thank you, everyone. Thank you. लाइव था पूरा यूट्यूब तुम्हारा चैनल ऑफिशियल नागपुर। वो उठा के रखे और सबसे पहले नीतीश को वो जो लाइव देख रहा था ना, नीतीश क्या नाम है उसको बुला, लाइव बंद कर बोला। उधर उधर रूम में बैठा था वो लड़का। हे सगळं वीडियो आहे ना, पूरा वीडियो वैसे चले जाएंगे। खाने का अनाउंस करो ना, खाने का अच्छा अभी अनाउंस करके रखो, कल्चरल के बाद। अच्छा ठीक। एक मिनिट थांबा रे, एक मिनिट इकडे 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 लो, रेडी रेडी पटकन क्या।
चलो हो गया